సినిమా అనేది కొందరి కల. ఎక్కడున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మూవీకి డైరెక్షన్ చేయాలనో లేదంటే మూవీలో నటించాలనో కొందరు కోరుకుంటారు. పరిస్థితులు కలిసి వస్తే ఆ దిశగా అడుగులు ముందుకు వేస్తారు. అలాంటి ఒక భారతీయుడు న్యూజెర్సీలో మూవీని చేయబోతున్నాడు. ఈ విషయం ప్రతి ఇండియన్ కు గర్వకారణమనే చెప్పాలి. దర్శకుడు రబీందర్ పరాశర్ అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో ప్రవాసుడిగా ఉన్నాడు. అక్కడున్న లోకల్ టాలెంట్ యాక్టర్స్ తో ఒక సినిమా చేయాలనుకున్నాడు. అందుకు కథను సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ఆ సినిమాకు టైటిల్ బ్రిలియంట్ ఐడియాని ఖరారు చేశాడు. నటీనటుల ఎంపిక ఇటీవల పూర్తి కావడంతో మూవీ షూటింగ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశాడు. జూలై 30వ తేదీ నుండి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో వివరించాడు. లోకల్ గా ఉన్న రికీ, జేఎస్ కింగ్ తో పాటు ప్రవాసులైన రాజేష్ పరాశర్, చందర్ మోహన్ తో పాటు 20 నుండి 30 మంది లోకల్ టాలెంట్ యాక్టర్స్ ను తీసుకున్నాడు. ఈ మూవీని హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. స్టోరీ లైన్: ఇద్దరు రెస్టారెంట్ ఓనర్లు, వారిద్దరూ శివుడు భక్తులు. ఒక రెస్టారెంట్ ఓనర్ కు అంతా కలిసి వస్తుంది. మరో రెస్టారెంట్ ఓనర్ సక్సెస్ కాలేకపోతాడు. అతనే ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాడని పరమశివుణ్ణి ప్రశ్నిస్తాడు మరో ఓనర్. ఈ నేపథ్యంలో స్టోరీ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఇది పూర్తి స్థాయి కామెడీ మూవీ. కోవిడ్ సమయంలో ఏం చేయాలో తెలియక కామెడీ రూపంగా సినిమా అందించాలని స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుని ఇన్నాళ్లకు దాన్ని సినిమాగా మలుస్తున్నాడు. బ్రిలియంట్ ఐడియా డైరెక్టర్ రబీందర్ పరాశర్ గతంలో బాలీవుడ్ దర్శకుడు మహేష్ భట్ వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాడు. ఆయనతో కలిసి 7 నుండి 8 సినిమాలకు అసిస్టెంట్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించాడు. ఆ తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డాడు. నటుడు రికీ కూడా నిర్మాతల్లో ఒకరిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రికీ న్యూజెర్సీలో పూజా రెస్టారెంట్ యజమాని. రబీందర్ ఆయనకు కథ వినిపించిన వెంటనే ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటానని రికీ చెప్పారు. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ముఖేష్ కాశీవాలా, డాక్టర్ శివకుమార్ ఆనంద్ గారు నిర్వహిస్తున్నారు. Hello. Good evening, everyone. First of all, let me thank you, everyone. On the weekdays, you have come far away to support our small efforts, a good beginning. As you know that the New Jersey is we always call a gateway of America. Whether in the name of celebrity, it is Bollywood, Hollywood, any celebrity, any politician, any religious celebrity comes, they always come through the New Jersey. So I have a big hope and a confidence that whatever it starts from New Jersey is always get a success. On this occasion, I would like to introduce the team behind today's press conference about a movie called A Brilliant Idea. It is not only the idea to putting a film or making a film today, but it's an effort to create a small platform. We have seen in New Jersey or New York in tri-state area, always we have a talent, whether it is a film, artist, singing, or any other leadership. Always New Jersey has produced a great leaders, a great actors, great singers. So basically, the whole idea to start a small platform which people have come on 70s and 80s. They have given a radio, they have given a TV, they have given a platform of any community, beginning of any event starts from New Jersey. So in short, this is the efforts to not only making a film, but to create a platform by which any artist, they can come and this small group, they will give an opportunity to take forward and further towards the success. And let me, not taking much of your time, but let me introduce the entire today the press conference behind 3 people. First of all, I would like to introduce Ricky of Puja Restaurant.
He's going to be the main cast. In his blood, he's an artist. Of course, he's in different field. But any artist, everyone knows, Kulraji knows, Pankajji knows, everyone knows that those who are artists, they are a good eater. They are food lovers. So Ricky is one of them. So Ricky is one of the instrumental to start this a brilliant idea, and not only that, but he is a part of the group. Second one, I would like to introduce, everyone knows the king, the Mintu Paji. So I would request Mintu, he's always very much involved in the community, not only acting, but since I see him in Indianica Academy, he had so much a role when we were playing Ramayan first time. And people have seen Mintu on Lincoln Center when we present Ramayan first time in the world largest, biggest city in New York. So Mintu was an instrumental to play a Ramayan, one of the big role in Lincoln Center. So Mintu is always with, not only with acting, but he's always behind the camera in politics also. The last, not the least, the person who brought this idea about, brilliant idea about the feature film, the person who has worked with one of the legend and very well-known director who has produced so many good films about it, Mahesh Bhatt. He's always worked with as an assistant director with Mahesh Bhatt. He has produced so many films like Dushman, then Jakham, Yahi, Mumbai Meri Jaan. So many good films he has created, and also himself, he was a director of 2 Bollywood films. One film is Yash, Ye Sunday Kya? ये संडे क्यों आता है, ये संडे क्यों आता है, and the other one is Kabab Mein Haddi, very famous Dilawar Mehndi Paji. He created it, he directed that movie. So let me introduce one of the film director and the person, the main instrumental behind this project and this movement during the entire film. He is going to take care of direction. He has written the story. He has directed, and he is going to do the direction also, particularly this film. But not, as I said, not only the film. His idea is to give and create a platform for the artists, those who have not get an opportunity. So I request him to come forward and say a few things about the film and what is his brilliant idea behind it, and also how he would carry forward not the goal to make a film, but he would like to create a platform to give an opportunity to those who have a talent. So let's give a big hand for Ravinder Parashish. I give this microphone. I end my speech by saying, quote, one of the company you must have heard about, a DHL. It's an international carrier company. So they have started, a 3-person started in 1968, the DHL company, 3-person. Now look at after 70, 80 years after, they have a more than 250 planes. They have a 25,000 vehicle. And they have a more than 5 lakhs of employee. So look at this, 3 people started the DHL, and when in 70 years of a span, it grows up to that big company. So I wish this brilliant idea will carry forward. After 70 years, who knows, maybe bigger than a DHL. Thank you. So let me give this microphone. He will give a little bit glimpses how he came, to whom they met, and किसको मिले यहाँ, और कैसे ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. He will give all the detail, and I request all the press to ask any kind of the question
by which we can tell what we are doing and what we are going to do and when the film is going to complete. So let me give it to Ravindra Paji. Thank you. Thank you. Please can have a seat. You can have a seat. आज अभी आपके सामने बात की है मुकेश काशीवाला, उनके इंट्रोडक्शन भी चाहिए ना। सबको पता है मुकेश काशीवाला, ही केम वेरी लॉन्ग बैक टू यूएसए। आई नोन हिम more than 20 years. He works very hard. He dedicated to cameraman for society, especially. He is a good man, good heart man. Anybody needs, he'll be there. Like everybody knows in more than 30-40 years he's here. So he's a very good person, wholehearted. I know him personally, his family. So for this brilliant idea, he's taking care of a camera, like director, not the director of photography, he's doing it, Mukesh Kashiwala. So that's what he introduced everybody, but nobody introduced him. He's a great man. I know him. That's what I want to introduce Mukesh Kashiwala. Thank you. Ananda is going to be a part of the camera also, because I am in the social life. So I request, and he accepted, Ananda accepted that if I'm not there, he's always there behind the camera. So Anand, and among us, I'm not taking much of your time, but among us, one of the great celebrity, and we learn so much. I have seen him, it's called Radio Guru, and the person, even Amitabh ji also told that if someone has a voice like Amitabh Bachchan, in USA, it's only Kulraj. So thank you for coming, Kulraj ji. We have learned so much from you. So we need your blessings. We need your help. You are part of this experiment, and carry forward from the film. We need your help. We want to create a platform. You are part of it. Among us, we have Umesh Patel, the legendary singer. He's going to be music. He's going to provide the music for this film. Umesh is a very well-known vocalist. Even he writes the songs, he composes it. He has his own studio in New Jersey, Piscataway. Thanks for coming, Umesh ji. Among us, so many other community people here. So I welcome everyone, and let's hear from Ravindra Paji. Thank you. Thank you. So we can sit down? Please. Yes. So actually I was also going to say like few words for Mukesh ji basically. Why I got impressed, basically he spoke so much beautiful lines about everyone. Basically, like he said, I was with working with Mahesh Bhatt, and Mahesh Bhatt is known for acting. Like whatever films I have done with him, like whether Zakham, which had Ajay Devgan and Naga Arjun. So that film was mainly known for acting. Now I would like, there are more films which I done with Mahesh Bhatt called Sangharsh, which are like Akshay Kumar and Preeti Zinta. Akshay Kumar also before Sangharsh, Akshay Kumar was not considered as an actor. But I think after Sangharsh, what Mahesh Bhatt worked on Akshay Kumar, he became suddenly a good actor. So then Dushman with Sanjay Dutt and Kajol, that was my first film, and that film also had Sanjay Dutt, a blind man. So that time I noticed that Mahesh Bhatt is not just a director, he is also a kind of doctor. So doctor of films. Now coming to Mukesh ji, what I got impressed, a director always want a cinematographer. So he has worked with one of my favorite directors, Yash Chopra. So I would like to tell him that thank you so much, Mukesh ji, for giving cinematography to this film, because this film will have two things. One, I can assure you, the acting
I will later introduce the actors of this film. You will notice a different kind of acting in this film. And secondly, because Mukesh ji is with us, you will see, because Yash Chopra is, as you know, Mahesh Bhatt is known for acting. Yash Chopra is known for, beautiful frames, beautiful cinematography, and Mr. Kegi, he has worked with Mr. Kegi, who is one of the brilliant cinematographer of Bollywood, and he has, he has worked with Mr. Kegi. So this film, Brilliant Idea, you will see, you will notice two things. One is the acting, and the second thing is cinematography. So I would like to, just a big round of applause, Mr. Mukesh. Okay. So now, coming to the characters. So this film is basically, when I came to US, I just noticed, that most of the actors or most of the talent of New Jersey, they actually think about either going to California, LA for looking small roles in Hollywood films, or they would go to Bollywood. Because I have also met, when I was with Mahesh Bhatt, I have met so many people from New Jersey and New York looking for small roles in Bollywood films. So that's what I didn't know that time, that I will come to New Jersey, US. So when I came to US, this was my first thought that let us create a platform in New Jersey. Let us create a platform in New Jersey so that people should the talent of New Jersey, that is local talent, and the surrounding states should not go to either Hollywood like California or India Bollywood. So they should find that opportunity in New Jersey. So that was the goal of that was my mission. And in this mission, when I was trying to contact people, I met Mr. Ricky, and Mr. Ricky had also the same vision that because he is now I want to introduce the actors of this film also. Mr. Ricky is playing, this film basically revolves around jealousy, competition, challenges of two restaurant owners, because one restaurant owner gets an idea that how, and his restaurant becomes one of the most busiest restaurant in New Jersey, and he is a successful restaurant owner. But the other restaurant owner, he is not getting that brilliant idea. So that is what the one restaurant owner is being played by Mr. Ricky, and the second restaurant owner is played by Mr. King. So I just want to first clap for Mr. Ricky as the restaurant owner number one. He will tell you what problems he is facing, who is successful, who is not. So that means, and the second I would like to have clap for Mr. King, who is playing the other restaurant owner. Now they will tell you who is failure, who has the brilliant idea, and who doesn't have the brilliant idea. So I am just giving this mic to Mr. Ricky. He will explain to you about his character. Hello, good evening everybody. तो जो रोल मूवी में है, ऐसा लगता है कि ये रोल मेरे लिए लिखा गया है। जब मेरे को डायरेक्टर साहब मिले तो उन्होंने, हम इधर ही मिले रेस्टोरेंट में, एक दिन सडनली सब कुछ हुआ। हम पहले मिले थे, 2-3 साल पहले मिले थे, तो एक दिन ये जर्सी में मूव हुए तो लंच में इधर आ गए, तो बताने लगे कि ये करते हैं। तो फिर मिलके हमने शुरू किया कि हम कुछ ना कुछ न्यू जर्सी में करते हैं। तो जो इन्होंने ये मूवी पहले लिखी थी इन्होंने मिलने से पहले,
बट जो मूवी लिखी थी वो लगता है कि मेरे ऊपर ही लिखी थी। जो मूवी में है वही मैं फेस कर रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि एक अंधविश्वास हो जाता है। इसमें मेरा रोल है कि मैं रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, मूवी में भी और रियल में भी। तो इसमें अंधविश्वास की बात ये है कि मैं भी भक्ति करता हूँ शिव की, जो मेरा पड़ोसी है वो भी शिव की भक्ति करता है, बट वो सक्सेस हो जाता तो मैं फेल हो जाता हूँ। तो उसके लिए हमारे लोग क्या करते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, बट क्या है कि हमने मेहनत करते रहे कि एक ना एक दिन सक्सेस होंगे, कुछ आइडिया मिलेंगे हमको। तो उस पर ये सब मूवी जब आप सिनेमा में देखेंगे तो सब पता चलेगा। अभी पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे, बट क्या है कि ये मूवी बहुत अच्छी है, कॉमेडी है। आप जब ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। नाउ आई विल गिव दिस माइक टू किंग पाजी। वो भी अपने रोल के बारे में कुछ बताएंगे और वो ज़्यादा बेटर होगा। पूरा बताओ मत, पूरा नहीं बताओ जैसा तुमने बताया। हेलो एवरीबॉडी, मेरा इसमें रोल एक रेस्टोरेंट ओनर का ही है और ये रोल जो मेरे को दिया गया है, मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब का थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे को इतना समझा कि मैं इनके साथ काम कर सकूँ। और हमारी टीम बहुत एक छोटी सी है, प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट किया है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें यही एक जो पब्लिक को दिखाने का है वो ही है कि एक जल्स क्या होती है किसी के प्रति और वो क्या कर सकता है, उसको आइडिया कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। जैसे कि इस फिल्म में है वो रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट हैं, उसमें मैं एक बहुत शिव जी का भक्त हूँ और उसमें जो मेरा रेस्टोरेंट है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और वो जो आइडिया है वो आप सब मूवी में देखोगे कि वो आइडिया क्या था। ऐसा रेस्टोरेंट आपने कभी देखा नहीं होगा कि ऐसा आइडिया भी कोई सोच सकता है, पर वो थोड़ा बिहाइंड है। और इसमें जो भी करैक्टर है, रिकी भी वही शिव जी का भक्त है, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, लेकिन इसमें मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा है शिव जी की, इनके थोड़ी कम है। और इसी वजह से ये थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन आइडिया ढूंढने में थोड़ा इनको टाइम लग जाएगा, तो मिल जाएगा। हमारे इंडिया में जैसे बोलते हैं ना कि देर आए दुष्ट आए, तो मिल जाता है। देर है लेकिन अंधेर हाँ, अंधेर नहीं। तो बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है। और इसमें तो मैं सब अपने ट्राई स्टेट को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास टैलेंट भी है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, उनको वेलकम है। जो स्पेशल लोग भी हैं जो जिनके पास सब टैलेंट वगैरह है वो भी आ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी आ सकते हैं। और हमारे ये डायरेक्टर साहब हैं जो इनकी ये क्लास भी देते हैं, और कोई भी किसी को भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत है वो फ़ोन नंबर करके आप मिल सकते हैं। और हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है और आपकी सबकी गुड विशेष है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो ये प्रोग्राम बहुत जल्दी हम शूट करने वाले हैं और आप सबका साथ चाहिए बस। और मैं थैंक्स करता हूँ आप सब मीडिया का, वेलकम, और सब जो भी हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं सबका वेलकम है। थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। एंड अभी जो भी है बाकी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। और अभी मुकेश जी को मैं देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। So among us, we have, I would say, celebrity we have among us, and the New Jersey also people, they have learned from so much
from one of the pioneer person who started give birth of radio, and everyone knows about him. His name is Kulraj, Radio Guru. I would request him to say a few words. He's a part of our platform. He has been with Bollywood so many years, worked with Jai Bachchan ji, or so many celebrities worked with. And definitely we need his support also, and he's in our part of our team also. And I give this microphone and give an opportunity to say a few words about his vision also. We've been talking so many years that we should start something. And this is the platform, you are part of this platform. And among your guidance also, with another guru, the Bollywood king, Raj Utpal also with us. He's been with Bollywood so many years. He's also a part of it. And everyone in this room, you must have seen in the past that we learned something, good things about everybody. So this is a good thing that we are going to need your help. We need your talent. We need your support. And with your talent and with your support and with your blessings, this platform will grow and give something to the new generation. So I'm not taking much of your time, but I give this microphone to our Radio Guru Kulraj. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for the honor, Mukesh Bhai. Please give a big hand to Mukesh Bhai. You know, I've been so honored and privileged to work with him, and we have done so much work together. You know, I can just say that people like him, and when they associate and contribute, everything turns to gold. So, congratulations, Mukesh Bhai, and of course, I've known Rajendra ji. He's a great, I think under his leadership, his knowledge for cinema, I think we all blessed to learn from him. And I think जो एक सीखने का तरीका होता है वो कभी मतलब वेस्ट नहीं जाता. You can start any time, any age, at any junction in life. Learning is a process, so never give up. Keep on learning, and if somebody says आपको एक्टिंग करनी नहीं आती तो उसको नहीं आती, वो क्या तुम्हारे बारे में बोल रहा है. हर कोई एक्टिंग कर सकता है, ओनली मेहनत करने की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, लर्निंग प्रोसेस की ज़रूरत है, डिक्शन, वॉइस, ब्रीदिंग, टेक्निक्स. बहुत लोग गाना गाते हैं, किसी को गाना नहीं आता, लेकिन गाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शौक है. So I think all the talent here in New Jersey, in the tri-state, North America, I had the opportunity to work with so many artists, you know. Might be Udit Narayan, Sonu Nigam, and so on, the list can go on. But I have seen one thing. Bollywood is no competition for us. We are NRI and we have to create our own platform. We have to have our own values. We have to understand who we are and what we are. इतनी दूर 10,000 मील से दूर आके वो हमारी इमोशंस और फीलिंग को नहीं समझ सकते. कितना अकेलापन है यहाँ, कितनी खामोशी. ये बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है. एंड आई थिंक राजेंद्र जी, यू नो, ही इज सो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड. एंड टू द कास्ट, टू द पूजा रेस्टोरेंट एंड किंग साहब, एंड आई हैव नोन देम फॉर मेनी years. I think great opportunity for all of us to interact and create something. दुनिया तो बात करती रहेगी भाई, दुनिया तो बोलती रहेगी, उनका मुंह बंद कर दो और कुछ करके दिखाओ. And of course हमारे किंग बैठे हुए वहाँ पर. जानी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं. इसलिए आपको रखा है, इसलिए गुरुजी आ गए ना. You know, I think of course मेरे को भी थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, और कभी मेरे को भी चांस देंगे राजेंद्र जी तो मैं भी एक्टिंग करूँगा और आप लोगों को हंसाऊँगा. जी, एक्टिंग में कुछ है ही नहीं. एक्टिंग में ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है. एंड इफ यू हैव अ गुड डायरेक्टर, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, बट यू हैव टू बी कमिटेड. चाहे डांस भी हो. रेखा को डांस नहीं आता था. आई यूज्ड टू वर्क विद रेखा, कितने साल काम किया, उसको डांस ही नहीं आता था. और जब उसको कमल डांस मास्टर उसको कोरियोग्राफ करता था और बताता था कि आप ऐसे करो,
तो वो शर्मा जाती थी, रूठ जाती थी, मेकअप रूम में चली जाती थी कि मैं डांस नहीं कर सकती। तो उसने बोला ओके, आप डांस नहीं करो, नहीं आता है ना, फाइन। तो व्हाट वी विल डू दिस, मतलब तुम्हारा क्लोजअप लेंगे, डांस यही है डांस। मतलब if you watch her movies, she's just doing little bit hand actions and face actions, डांस नहीं कर रही, but she today सारी दुनिया उसके बारे में बात कर रही। So you all have talent and I think let's rock and let's make it happen. कुछ और कहूँ? सरदार खुश हुए, शाबाशी देगा। Thank you so much. Thank you. Mukesh bhai, thank you for the opportunity. So we can open up a forum, those who have a question regarding the film or the platform, any question you can ask in our capacity, we'll answer it. Our question. Yeah. Our question for Ravindra ji. Ravindra ji, you said the script was already written. When was it written? And there is no female character name I have seen in the movie. If there is yes or no, please elaborate. There is a microphone. Good catch. You can use it. Might be very question. So, okay. So this film is written by me and my two brothers, Chandra Mohan and Rajesh Prashar, who are in India right now. So we wrote this film. Actually, I used to live in Pennsylvania, Philadelphia, and suddenly the pandemic came. And in that pandemic period, me and my brothers who were in India and I was in Pennsylvania, like Philadelphia, so we started writing a film. I thought that let us make people laugh. लोगों को हंसाया जाए। पैंडेमिक में सब बहुत सारा दर्द था, सबको मालूम है। तो मैंने बोला कि एक जैसे चार्ली चैपलिन था, वो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हंसा के बताता था। ऐसा नहीं कि आपको कोई खून खराबे वाली फिल्म बना के ही सोसाइटी की प्रॉब्लम बताने की। आजकल खून खराबा बहुत चल रहा है, इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको क्राइम से रिलेटेड फिल्में बनानी है। आप चार्ली चैपलिन की तरह लोगों को हंसा के भी बता सकते हैं कि सोसाइटी की एक ये भी प्रॉब्लम है। जैसे उसने बताया कि अचानक से एक दिन मशीनों ने लोगों को नौकरी से निकलवा दिया। पहले लोग काम करते थे, जब मशीन आई तो लोगों को बाहर कर दिया। आज वही काम AI से हो रहा, राइट? बहुत सारे रोबोट्स आ गए। अमेजोन में मैं अभी पढ़ रहा था कि बहुत सारे, आई थिंक मोर देन 3 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह पे रोबोट्स रख लिए। तो ऐसा पहले भी हुआ था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम इसको मार धाड़ से दिखाएं। तो ऐसा वो पैंडेमिक जब चल रहा था तो हमने सोचा कुछ कॉमेडी फिल्म ऐसी बनानी है जिससे लोगों को कुछ एक मैसेज भी मिले। तो इस फिल्म में आप ऐसा समझेंगे कि ये कॉमेडी फिल्म जो मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा जॉनर है जो मैं अपने गुरु महेश भट्ट को मैं एक हाजिर नाजिर जान के ये बता सकता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी देखा नहीं होगा सिनेमा में। मैं मतलब वर्ल्ड सिनेमा में भी बता सकता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है। इस वक्त हमारे पास पैसे थोड़े से इसका बजट ऐसा है कि हम बहुत लेविश बजट पे नहीं बना रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब से सिर्फ एक बात सीखी है, महेश भट्ट से, कि अगर आपकी स्टोरी स्टार है ना तो आपको स्टार की ज़रूरत नहीं है। तो इस फिल्म की स्टोरी स्टार है, स्टार कास्ट के लिए चाहिए ही नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और दूसरा आपने पूछा, तो मेरे जो स्टार्स हैं वो है मिस्टर रिकी, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी ही रेस्टोरेंट ओनर की है। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जब मैंने इनको पनीर भुर्जी बनाते हुए देखा किचन में, किसी का बाप वो बना नहीं सकता जिस तरह से कड़छी हिलाते हैं। मैं किसी भी एक्टर को ट्रेनिंग दे दूँ कि भैया 3 साल ऐसे कड़छी हिला, वो नहीं बना पाएगा पनीर भुर्जी जैसे ये बनाते हैं। तो ये फिल्म का जो प्लॉट है वो ऐसा है कि इसमें ऑलरेडी ये टेलर मेड रोल है इनके लिए, राइट? और दूसरा है मिस्टर किंग पाजी, जो कि वो भी मतलब इस फिल्म में रेस्टोरेंट के ओनर हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि रिकी, जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में और ये मालिक है, इनका रेस्टोरेंट बेचारों का चल नहीं रहा है इस फिल्म में और उनका चल रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यू जर्सी के जो जितने भी लोग हैं और जो न्यूयॉर्क पर जो भी लोकल्स आसपास स्टेट्स के हैं, हमें सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, इस फिल्म को एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है इस फिल्म का सब्जेक्ट। क्योंकि जब आपके पास बजट थोड़ा ठीक ठाक हो तो आपको सब्जेक्ट ऐसा उठा हुआ होना चाहिए आपका कि लोगों को पता चले कि यार हाँ ये हम एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हिट और फ्लॉप भगवान के हाथ में है। तो अच्छी फिल्म बना के देंगे आपको, और 2 लैंग्वेज में बन रही है, 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी फिल्म इंडिया के लिए होगी और इंग्लिश फिल्म यूएस और अदर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। आप बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इसमें फीमेल कैरेक्टर क्यों नहीं है, तो ऐसा है कि फीमेल कैरेक्टर इसमें है 100%, और क्योंकि होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विदाउट फीमेल कैरेक्टर के चल भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें आपको कहीं ना कहीं तो फीमेल को रखना ही है। लेकिन क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया आपको कि ये फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इसमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं किसी फीमेल को हम इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो बेसिक प्लॉट है ये इन दोनों के ऊपर जा रहा है। बाकी जो है ना वो सब कैरेक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे हम रिवील करेंगे, और उसमें आपको डेफिनेटली फीमेल एक्ट्रेस जो अपना फीमेल्स नज़र आएंगी, और इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट भी बहुत है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त तक हमारे इस फिल्म में अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा न्यू जर्सी का टैलेंट इसमें कास्ट हो चुका है। तो आप उस सब कास्ट के लिए भी एक बार क्लैप कर सकते हैं ताकि उनका भी हौसला बढ़े। बाकी मैं एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन था, ऑलरेडी पंकज भाई ने पूछ लिया, उसके सब्सिडियरी है। अगर वुमेन का लेडीज़ का जो रोल देते हैं तो अभी बोले कि डेफिनेट ले लेंगे। मेरा ख्याल है, मेरा इंटरेस्ट है, जो मिंटू भाई का और रिक्की भाई का जो भी है रियल वाइफ लिए तो अच्छा रहे। हो सकता है। I have another question for Ricky and Montu both. The question to Ricky and Montu Paji. You both are hotel owners running a restaurant, and also the Lord Shiva Bhakta, right? So do you believe in luck or hard work? अभी मैंने देखा है कि दोनों चीज़ मैटर करती है। हार्ड वर्क के साथ लक होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, बहुत मैंने देखे कि जिसने हार्ड वर्क किया, अभी तक कर रहे हैं लोग अमेरिका में आके हार्ड वर्क कर रहे हैं, लक साथ नहीं देता, वो ऊपर नहीं जाता। बहुत लोगों को देखा है कि जिनके पास लक बहुत है, हार्ड वर्क नहीं है, बट वो सक्सेस होते हैं। 50-50 है, लक हार्ड वर्क के साथ लक होना बहुत जरूरी है। सही है। पर जैसे सर ने बताया कि the way you cook paneer burji, nobody which I have not seen, but I trust him, and if it's proper marketing given, it can reaches to all the household around. थैंक यू। ये तो आइडिया पे जाता है ना। अगर आइडिया किसी को भी मिल जाए और वो आइडिया आपके लिए लकी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी बात, जैसे इनको बोला कि जे वो कर्सी घुमाते हैं, वो इनकी मेहनत है, मेहनत, पैशन है। पर वो दूसरा बंदा तो कोई कर नहीं सकता क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, और अब इनका लक जो इनका साथ दे रहा है। और वही एक स्टोरी भी ऐसी है कि जो इसका लक और मेहनत का साथ दे रहा है, तो दोनों ही साथ मिल गए अब तो। तो इसलिए ये आइडिया भी और ब्रिलियंट आइडिया जो मिला है, इसलिए इस फिल्म का नाम भी यही है। So who choose the name, Ravindra ji? Brilliant idea. How did the name came up? ये ब्रिलियंट आइडिया हम तीनों ब्रदर्स हैं, मैं और मेरे जो 2 ब्रदर्स हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ नाम सोच रहे थे कि जैसे ना आपने देखा होगा, आप भी जैसे हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए ना, ये भी एक आइडिया की वजह से इकट्ठा हुए हैं, राइट? तो मैंने यही देखा कि
दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर बंदा कोई ना कोई आइडिया या तो किसी से ले रहा है या दे रहा है। तो मतलब आप अभी भी जैसे आप कहीं पे भी आप देख लें, कोई ना कोई यहाँ पे भी ना कोई किसी को आइडिया दे रहा होगा कि तू ऐसा कर ले तो वैसा हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर है कि वो माने कि नहीं माने। तो मैंने बोला कि जब आइडिया चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, इस मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, हर बंदा किसी ना किसी को आइडिया दे रहा है, चाहे वो उससे पूछे या ना पूछे। आप जैसे ही हम बाहर जाएंगे ना कोई बंदा आपको मिलेगा, सर आपको मतलब मुझे पता है कि आपको आइडिया की ज़रूरत नहीं, पर मैं ना देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बस देना है आपको आइडिया। तो कोई ना कोई बंदा पूरे इस वर्ल्ड में कोई ना कोई आइडिया किसी को दे ही रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने ब्रदर से डिस्कस किया कि इसका, और जो बंदा आइडिया देता है ना वो हो चाहे ज़माने भर का फ्लॉप आइडिया, वो बताएगा उसको ब्रिलियंट आइडिया कि मैं तुझे एक ब्रिलियंट आइडिया देता हूँ और उसको पता है कि इससे बर्बाद होगा ये, वो तब भी ये बोल के देगा कि तू इसको ट्राई तो कर एक बार। जैसे किसी ने, मुझे याद है मैं चंडीगढ़ में था तो किसी ने उसको बोला कि यार तेरे से ना ये तेल लगा के तेरे बाल आ जाएंगे, किसी ने किसी को आइडिया दिया, तो वो भी तो आइडिया था, वो जितने थे उसके साले वो भी झड़ गए। Only because of free? No, the idea no, is no, free? आइडिया वो बोल रहे हैं कि ब्रिलियंट तेल है, ये तेल ही ब्रिलियंट है। तो मैंने बोला ब्रिलियंट, कोई बंदा ऐसा कैसे बोल सकता कि यार तेरे को ना मैं एक फ्लॉप आइडिया देना चाहता हूँ, सुनेगा? वो बोलेगा कि यार सॉरी मैं फ्लॉप आइडिया, मैं सिर्फ ब्रिलियंट आइडिया लेता हूँ। तो आइडिया सारे ब्रिलियंट है। अब इनका जो टैलेंट है, लेकिन इनका बेचारे का रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है इस फिल्म में, ठीक है ना? तो यानी इनको भी आइडिया वो मिला नहीं, यानी इनको सारे बंदे फ्लॉप आइडिया दे रहे हैं अभी तक, ये बोल के कि ये ब्रिलियंट आइडिया है, राइट? वो इस फिल्म में कोई आइडिया देने वाला है रोल? बहुत है, वो धीरे धीरे सब रिवील करेंगे, क्योंकि फिल्म का नाम ही तभी तो आपने बोला कि आइडिया, ये नाम कैसे रखा? तो जब हम डिस्कशन कर रहे थे पेंडेमिक के दौरान, तो एक वर्ड बार बार आ रहा था, ब्रिलियंट। मैंने बोला मैंने आज तक किसी बंदे को ऐसा सोचा नहीं, देखा नहीं, जो बंदा बोले यार सर कैन आई गिव यू अ फ्लॉप आइडिया। हर बंदा ही बोलता सर कैन आई गिव यू अ ब्रिलियंट आइडिया। वो बोलता है कि मेरे से जैसा दिमाग इस दुनिया में है ही नहीं साला कहीं पे। तो उसको लगता है कि मैं न्यूटन हूँ यार, मुझे पता है सेब क्यों गिरा था नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो मेरा दिमाग ब्रिलियंट है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ब्रिलियंट वर्ड क्योंकि बार बार आ रहा है, तो इसका नाम रख दें ब्रिलियंट आइडिया। सो दैट्स हाउ इट्स टाइटल इज ब्रिलियंट आइडिया। सो ओके, थैंक यू। So first of all, congratulations to all of you. Like it is really, and it's a brilliant idea that I can say. So my question is like, what is the message we are trying to convey? With like, what is the message? What is the moral behind it? Yeah, with this brilliant idea for the, it's motivational or it's something that you would like to put light on. You want? See, the message and the conclusion of the film in life, it's a learning lesson in the life, that if you have a jealousy in you and आप किसी को बुरा चाहते हो तो कभी आप सक्सेस नहीं होंगे. This is the whole idea of the film. If you think that you are not doing good, but if you think that somebody is doing good, and you must be happy with it. So the whole message of the film, even though you are not doing good, your opposition or your competitor is doing well, bless them. But don't be jealous. So this is the whole story is about it. And the conclusion, the person who started the business together, one person is doing excellent, food is good, their environment is good, but he is not getting success. And the other person who is not capable of what he is doing, but because of idea, he is getting success, he is getting rich, and restaurant is running so good, but the other person becomes so jealous. So the whole idea of this film, you don't have to be jealous in your life. And don't think negative. If you think positive, you get success. That's the whole idea of the film. Any other question? Let me conclude with a couple Of information
among the press and the guests. This film is going to shoot on the latest technology called 8K. Of course, we are going to edit, produce. Everything is done in New Jersey, USA. It's going to take 6 months, the total production. We are going to do the premiere in India first. Then we are going to do the premiere in America. The budget is low, but people, because of the relation with the community, a lot of people have come forward to help do this film. And of course, we are going to give a mileage to them also, give a credit in the film also. So I request all the people, those who are watching this, please support us. We'll definitely give mileage, the company or the corporation or the person who is helping us will definitely reward you. And the other thing, as Ravinderji said, that we have a cast more than 35, but we have still some of the scene and some of the character we are looking for. Those who are interested in this, of course, we have you have an opportunity and we'll give the platform to you. And the second thing, the location of the film is a very iconic area in New Jersey. People must have seen it and they love Oak Tree Road, maybe Metro Park, Albert Palace, and so many landmark of New Jersey we are going to try to cover, by which it creates an interest, those who live or those who've been to Jersey and New York. So it is very interesting. Thank you. Can I quickly? Sure. Anand asked one question to Ricky and Monty, that if their spouse can be involved in this movie, how comfortable you will be? First they have to accept. No, I'm just saying, if it's approved by the director, Do you have any idea? एक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, Mintu, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए बस. do you have any idea about this? अच्छा, पहले तो क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं. खास करके जो स्पाउस होते हैं ना, वो थोड़े घबराते हैं क्योंकि हीरोइन के साथ काम करना है. लेकिन अभी हीरोइन है नहीं तो उनको तो टेंशन नहीं है. अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वेलकम है. हम तो सबके लिए बोल रहे हैं कि जो भी आना चाहता है इस मूवी में, Including your नेक्स्ट टाइम, spouse. इंक्लूड एवरीबॉडी. Yes. Ricky, you comfortable with your wife? कंफर्टेबल की बात मैं वो बताता हूँ. मैंने ना फर्स्ट वीडियो शूट किया था सॉन्ग का, प्यार उसका नाम था, 2015 में किया था. जब शूट किया था तो लड़की थी साथ में, शूट करके गाना रख दिया था ऐसे ही, घर पे बोला नहीं था कि ये गाना ऐसे लड़की के साथ शूट हुआ था. 2 साल बाद जब सिंगर का मेरे को फ़ोन आया कि इनकी वैलेंटाइन डे आज गाना हमने रिलीज़ करना है. जब सुबह उठे थे, जब उसने बोला कि गाना रिलीज़ करना है तो मैं क्या होगा अभी घर पे. तो मैंने बोला भाई गाना मेरा अभी आने लगा है, रिलीज़ होने वाला है, बट मैंने अभी देखा नहीं कैसे बना है, क्या बना है. तो मैं बाथरूम में गया, उसको फ़ोन किया, मेरे को पहले गाना पूरा सेंड कर कैसे बना. तो बाथरूम में जाके गाना देखा, उसके सीन देखे. तो जब सीन देखे तो आकर बोला मैंने कि भाई पता नहीं मैंने ऐसे शूट किया, कैमरे से पता नहीं उन्होंने लड़की को कैसे साथ जोड़ दिया. तो फिर मैंने उसको बोला अभी कोई बात नहीं, पहला शूट है, तू मेरी हेल्प करना, इसको अपनी फेसबुक इंस्टा पर डालना कि अपना नाम हो जाएगा. बट अगर वाइफ साथ में करना चाहते तो कोई डर नहीं रहता. So we conclude the press conference. I thank Anandji to be a part of this film also. Always very well known, not in New Jersey, but always in USA, named Masala Junction. And I thank from bottom of my heart
from our team, Gunjesh Desai, always he is doing live. I thank ITV, Parik Worldwide Media, always supporting not any cause, but no, any event is happening in Tri-State. Parik Worldwide Media, whether it is TV, e-media, print media, is always there. And thanks for the support. I thank those who have not come here. They send us good regards, like Radio Jindagi, Times of Sunil Hali, Indian Express, TV Asia, and they send us, and on behalf of TV Asia, Pankaj is here. So thank you, Pankaj ji. And those who are supporting all the press, thank you for supporting. We need the support and the blessings from you. So I give this microphone to Mintu. ऑल्सो जी भाभी जी आज मिसिंग है, उनका भी थैंक्स करना है। उन्होंने बोला था आएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम करके वो नहीं आ जा पाए, लेकिन थैंक्स फॉर। And by going home, there is a token of a small gift you can take, sponsored by Bombay Kitchen. They are launching a new restaurant concept, Bombay Kitchen from Rajbhog. So they have given a small token as a gift with the Puja restaurant gift card. And so please, when you go after the dinner, you just take one bag. Thank you very much again for taking your time out and supporting us. Thank you very much. Good night.